Right and left. Left. हाँ, she's speaking correctly. Left brain meridian, Right brain meridian, left triple vomer meridian, and right triple vomer meridian. This is Hotness chakra territory. Then next is Heat chakra, Vishuddha chakra has connection with left small intestine, right small intestine, left heart meridian and right heart meridian. उसके बाद नेक्स्ट क्या आया? नेक्स्ट इज Anahata chakra, wind chakra has connection with left gallbladder meridian, right gallbladder meridian, left liver meridian and right liver meridian. And then after the solar chakra is Manipura chakra, humidity chakra has connection with left stomach meridian, right stomach meridian, left spleen meridian and right spleen. Also with spleen meridian and pancreas meridian also. Okay. उसके बाद after this Manipura chakra, humidity chakra is Swadhisthana chakra, Swadhisthana chakra has connection with left large intestine, right large intestine, left lung and right lung. उसके बाद next is Muladhara chakra. Coldness chakra has connection with left UV meridian, right UV meridian, left kidney meridian and right kidney meridian. This is how you know that chakra is so potential. It has connection with 4 meridians. And then in second phase we try to understand that chakra has front window and back window also. It has left window and right window also, but we are studying front window and back window this time. So front window, when we talk about Ajna chakra, front window of Ajna chakra, of Hotness chakra has connection with left brain meridian, right. Please speak with me, then only your consciousness will develop. Left brain meridian, right brain meridian, and back window of Hotness chakra has connection with Left triple vomer and right triple vomer. So if you have triple vomer case, you have to approach which window of Hotness chakra? Back. Yes. And then next is front. Only front heat chakra is connected with left heart meridians, 2 heart meridians. Back heat chakra side. Yes. So this way you understand front and back criteria. Front you are focusing on yin meridian and back you are focusing on yang meridian. Okay. Now tonification and sedation. Yin side chakra movement is clockwise. Tonification. Clockwise. So when you put colors, it is very good to follow this directional criteria. Suppose, for example, you want to tonify Ajna chakra, Yin Ajna chakra. Kya? Yin Ajna chakra. Then what you will do? Clockwise. Yes, Ajna chakra is here, but clockwise may be how you have to start. You are keeping your pen here from center towards outward, because tonification means we need expansion. अगर हॉटनेस चक्र वीक है तो क्या हो जाएगा? चक्र का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. सो इसको इफ यू वांट टू टोनिफाई, हमको क्या करना है? इसको एक्सपेंशन करना है. सो कलर थेरेपी में व्हाट हाउ यू विल डू इट?
It is not just simple, acha, hotness chakra tonify, just zigzag. No, it is not like that. You have to have that kind of consciousness कि hotness chakra is weak. Hotness chakra is weak or slow. It is contracted form. It is contracted. So what you will do from center, sketch pen एकदम center में रखा, and then उसके बाद क्या किया? From center you are going outward, धीरे-धीरे going, you are expanding, and this is how you tonify. आप समझे? And if you want to sedate, what you will do? From outside to inside. Very good. From outside to inside. If front tonification is clockwise, then sedation will follow which direction? Anti-clockwise. ठीक है? So this is criteria for all front chakras. But when we talk about back chakras, back chakra for tonification you do anti-clockwise, because you have to practice this kind of direction from now only, because in 6th when we do needle therapy we need to follow this kind of direction. So anti-clockwise. Yang side, suppose Ajna chakra, when you're putting color therapy, your pen should move for tonification anti-clockwise, and tonification के लिए again from center to outward. That giving that expansion वाली consciousness के साथ from center to outward. This criteria you have to follow when doing color therapy. Also sometimes GP, also when you are checking Ajna chakra या स्वादिष्ठाना चक्र, अगर आपको लगता है कि चक्र वीक है या चक्र क्या है एक्सेसिव है, तो पेशेंट का जिम्मी से भी हम ऐसी मसाज कर सकते हैं. अगर आपकी कॉन्शियसनेस में ये बात बैठ गई है, जब चक्र वीक होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, श्रिंक हो जाता है. When chakra excessive होता है, so that is why chakra in everyone, chakra shape is there, but maybe your Ajna chakra is this much, your Ajna chakra is this much. So chakras is energy level. Sometimes it is like this, sometimes it is like this. But if it goes beyond borderline excessiveness, then it will give you disease. And if it is too much shrink, then also it will give disease. So when you have this kind of consciousness, your color therapy is very beautifully working. ठीक है? And now what else you can do? कलर थेरेपी हो गया. मेरिडियन चक्र की बात कर रहे हैं ना, तो चक्र मैग्नेट अभी हमने सीखा था. कैसे लगेगा चक्र? You want to tonify heat chakra. Patient has hypothyroid. Patient has White sea. कहाँ पर? नेक एरिया, विशुद्ध चक्र, हीट चक्र. सेंटर में क्या करेंगे आप? चक्रा लगा देंगे. बट चक्रा का जो रिंग है उसके बीच का जो सेंटर मैग्नेट है वो क्या होना चाहिए? व्हाइट सीन. आफ्टर एप्लीकेशन सेंटर व्हाइट सीन होना चाहिए. टचिंग इज गिविंग द इफेक्ट, तो इट मींस इट इज टोनिफिकेशन. ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए हमारे बहुत हम लोग इसको यूज करते हैं. हाइपोथायराइड हो गया. अच्छा, इफ हाइपरथायराइड है तो क्या करूँ? येलो सी. अच्छा, ये बात आप छोड़िए. अगर कोई पेशेंट एनेमिक है तब क्या करेंगे? Because see, this has connection with circulatory system also. Now see this slide. अभी इसको हम देख लेते हैं कि किस चक्र का किस एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ रिलेशन है. Hotness chakra has connection with pituitary gland. So if pituitary gland is enlarged, if your medical report comes and it says that pituitary gland is enlarged, then what you will do? Sedation. Yellow center yellow sea. So you have color also, and which color for sedation? येलो. Which color? Blue. Hotness tonification is revised fast. Hotness tonification is orange. Sedation is Blue. heat self color is Red. and sedation is Brown. yes.
Humidity self color is Yellow. yellow. Sedation is Green. okay. And then dryness self color is Brown. sedation is Red. After that, coldness is Blue. sedation is Orange. okay. Now these chakras have connection with endocrine gland. Heat chakra, thyroid gland. Wind chakra, thymus gland. Humidity chakra, pancreas. Dryness chakra, adrenal glands. Coldness chakra, ovaries and testicles. It means if your patient has some ovary situation, ovary or testicle problem, which energy is required? Which energy will work? Coldness. And not only this, if this is telling you for ovaries and for reproductive system, you work with coldness chakra. It is already giving you symbol of meridian also. So which meridian you will choose for treating reproductive system? UV. Yes, kidney and because UV and because reproductive system located downwards. And which zone is there? Which chakra is there? Coldness chakra. Muladhara. And then solar chakra has connection with pineal body. Pineal body, hypothalamus and all other endocrine gland. This is solar chakra. Sometimes with this consciousness you can stimulate this chakra. Solar chakra. Solar chakra body में किधर है? Yes, this area. And now after endocrine gland, hotness chakra, when we talk about various systems of body, you know, nervous system, hotness chakra itself is controlling nervous system and endocrine gland system. ऐसे भी कई बार पेशेंट होंगे वो बोलेंगे हाइपोथायराइड भी है, ओवरी सिस्ट भी है, ठीक है, होगा ना? एंड देन अजना चक्रा उसमें वीक है. So nervous system, अगर many endocrine glands are involved, if more than one endocrine gland, if you find deficiency in 2 or 3 endocrine gland, it means hotness chakra is weak, because hotness chakra directly controls endocrine gland. ठीक है? So hotness chakra is weak because कई बार ऐसा भी मिलेगा ना, वो बोलेगा मेरे को हाइपोथायराइड भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कोई इशू है ना? एंड पैंक्रियास, डायबिटीज भी है. तो अगर कोई पेशेंट 2-3 endocrine gland की प्रॉब्लम बताते हैं, instead of working individually, it is good to work. And the hotness chakra. Yes, hotness chakra tonification is very good. Automatically क्या हो जाएगा? है ना? It will uplift energies. So now thyroid gland का connection cardiovascular system, circulatory system है. अभी heart से related कोई भी disease हो, arteries की भी हो, veins की भी हो, blood से related कोई problem हो, which chakra? So this is not throat chakra. Sometimes you don't feel like doing because अगर throat में कोई problem होगी तभी हम इसको करते हैं, है ना? ये बात है ना जो प्राणल फट यही करते हैं ना. थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड है, we use this. But it is not only, this is big territory, this is covering cardiovascular system or blood system, है ना? जितना भी body का arteries है, vein है, this chakra is handling. That is why your Vishuddha chakra should be very very strong. ठीक है? Your heat chakra has connection with cardiovascular system. So if you find varicose veins, if you find anything, not only this, this chakra has, when we talk about emotions, this chakra has connection with which emotion? Joy. So can you do tonification here? Yes. Always we feel like we tonify heart meridian. We put red line on heart meridian. Yes, ठीक है? लेकिन if it is very deep, if it is very chronic, good to treat chakra. Now emotional situation also. अभी आपको थोड़ा सा consciousness develop हुई, because when we think about emotions we always tonify meridian. Now can you tonify heat chakra? Vishuddha chakra has connection with joy emotion. And then when we come to thymus, like see, because most of you are not using chakra system, that is why I wanted to nourish your consciousness so that you become
become confident and can use this. Now, if person has various problem regarding muscles, muscle pain, more often muscular disease, even muscular dystrophy, which chakra? Muscles. Which chakra is has connection with muscle? Yes. You all know that liver meridian and gallbladder meridian. फटाफट आप उसमें काम करते हैं. But what about chakra? ठीक है. So muscles का कोई problem होगा and you will treat which chakra? Anahata chakra, wind chakra. Now then is humidity chakra. Humidity chakra has connection with digestive system and lymphatic system. आपका humidity chakra किधर है ना? आपका ह्यूमिडिटी चक्र है, इसका कनेक्शन किसके साथ है? लिम्फैटिक सिस्टम. कई लिम्फ नोड बॉडी में हो गए हैं, कलेक्शन लिम्फैटिक नोड्स हो गए हैं जगह जगह. इट मींस दिस चक्र, दिस ह्यूमिडिटी चक्र इज वर्किंग वेरी फास्ट. या इसका साइज क्या हो गया? मेटाफिजिकल साइज क्या हो गया? एक्सपेंशन. So you can do with this because you have, when you are treating chakra, you have to have that consciousness. You should not be technical. And now dryness chakra, adrenal or hair disease, skin disease, respiratory system. आपका respiratory system का भी किसके साथ connection है? स्वादिष्ठाना chakra. Yesterday I told you pathway criteria also we discuss after this. And now coldness chakra, ovaries and testicle. उसके बाद excretory and reproductive system. Blue color you know for tonification and orange color for sedation. So solar chakra for hypothalamus and all other endocrine gland. That is why sometimes pathway criteria. So this is the connection, but one connection is pathway type. I told you yesterday कि जैसे chest है, chest में कौन सा चक्र रहता है? Anahata chakra. With this consciousness, if someone has lung problem, you can approach Anahata also because Anahata chakra stays here. जैसे मेरिडियन में पाथवे को फॉलो किया था, तो चक्र के आसपास, चक्र इज लाइक यू नो, दिवाली में चक्री देखी है? क्या होता है? जब आप उसको लाइट करते हो तो वो इतना घूमती है और एनर्जी अपने आसपास को, वो लाइट आसपास को भी दे सकती है. इस चक्र का कनेक्शन किसी के भी साथ हो, मसल्स के साथ हो, किसी के भी साथ हो, पर जब ये घूमेगा, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये लंग्स को लाइट नहीं देगा? ये लंग्स को एनर्जी नहीं देगा? सो समटाइम्स पाथवे लाइक अ बेबी, लाइक वेरी सिंपल कि अगर किसी पेशेंट को यहाँ प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो हम विंड चक्र पर भी काम कर सकते हैं, टोनिफाई या सेडेशन. अगर किसी को ब्रेथलेसनेस हो रही है, उसका क्या लग रहा है? अच्छा, कई बार हमको सोचना पड़ता है कि कौन सा चक्र किस ऑर्गन के साथ रिलेशन है, बट सिंपल यहाँ पर कौन सा चक्र रहता है? अनाहता विंड चक्र रहता है. फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम वेरी गुड टू, बिकॉज जब तक आप उसकी फैमिली को अप्रोच करोगे, ये पाथवे वाला क्या कर देगा? काम करना शुरू कर देगा. तो इस पॉइंट ऑफ इस कॉन्शियसनेस को अपना जरूर रखना, और टोनिफिकेशन और सेडेशन पर हम इसको यूज कर सकते हैं. So these are the you can take picture today because big slides are, you can take picture also later. I'll put slides again. Again first is चक्रा को जब आप लगाएंगे कुछ मिनट्स तक ऑब्जर्वेशन में रखना है. बट अगर क्रॉनिक केसेस है, और पेशेंट को वो चक्रा लगाने से डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ है, ही फील्स गुड, तो आप एवरीडे 2 आवर्स कर सकते हैं. बट समटाइम्स एक्सपीरियंस में आया है कि पेशेंट से इसकी चक्रा इतने घंटे लगता है तो मुझे आराम आता है. डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. समटाइम्स कोई कभी क्या होता है, कुछ सिम्टम्स बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं. जब सिम्टम्स एक्सप्रेसिव होते हैं तो कई बार 5 मिनट्स में पेशेंट सेज कि आई एम फीलिंग बेटर. जैसे ही पेशेंट बोलते हैं आई एम फीलिंग, वेदर इट इज बार मैग्नेट, ब्यूल मैग्नेट और चक्रा मैग्नेट, अगर पेशेंट कह दे कि एग्रीवेट हो रहा है तो क्या करना है आपको? चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन. लेकिन अगर पेशेंट कह दे आई एम फीलिंग बेटर, देन यू कैन टेल पेशेंट कि कम से कम 2 घंटे तक आप रख लो. एंड अगर आपको लगे कि डिस्कम्फर्ट फीलिंग कभी भी हो तो उसको क्या कर देना, चाहे वो बार मैग्नेट हो, ब्यूल मैग्नेट हो या चक्रा मैग्नेट हो, इसको क्या कर देना, निकाल देना.